respected teachers and my dear friends. First of all, happy Teachers' Day. Myself, Samruddhi Samir Adsule from Standard 9th C, Priya School. Today I am going to say few words on Teachers' Day. I will begin my speech with a beautiful shlok. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. In this pandemic situation, we are celebrating Teachers' Day in our home only. Why on 5 September Teachers' Day is celebrated in India? In India, we celebrate Teachers' Day on 5 September, the birthday of India's second president, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. He was a great scholar and favorite teacher of his students. One day, his students came and seek his permission to celebrate his birthday. Instead of celebrate his birthday, he suggested to celebrate Teachers' Day in respect of all teachers. Since 5th September is observed as Teachers' Day in India. Last but not least, I will mention a quote by Dr. APJ Abdul Kalam in which he says the purpose of education is to make good human beings with skills and expertise. Enlightened human beings can be created by teachers. Thank you. Hi everyone. Happy Teachers' Day to all my teachers. And I want to thank my teachers who have teach us in this COVID time. So I want to dedicate my dance for my teachers. Thank you. Teachers and my dear friends, the light of the world, the beacon in the dark, and the hope that gives us strength to survive is our teacher. Today we celebrate Teachers' Day, a day kept aside to honor the gifted souls who work every day to make sure that the future is bright for all of us. On this beautiful occasion, let us take the opportunity to convey our wishes to all our teachers who have given the impeccable contribution in shaping us. Every year, 5th of September, we celebrate Teachers' Day. It is a day filled with lots of excitement, joy and happiness as students are eagerly looking forward to tell their teachers how and why are they special to them. It is my honor to talk about our dear teachers in this wonderful occasion. September 5th is marked by the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, and the Teachers' Day is celebrated in commemoration of his birthday. Along with being a successful leader in the form of president of the country, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a great scholar and an excellent teacher. There is saying that the teachers are greater than the parents. Parents give birth to the child, whereas teachers mold that child's personality and provide a bright future. Teachers stand by us at every step to guide, inspire and motivate us to become a better person. I would like to extend my gratitude to every teacher for dynamic support. You are all grateful to us. In this special occasion, I just want to tell that to the world, you may be just a teacher, but to your students, you are a hero. Thank you. सुप्रभात। तो मैं हूँ संस्कृति पतंगे और आज इस दिन पे मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस। यह दिन हर एक शिक्षक के लिए बहुत ज़रूरी दिन है। इसी के साथ साथ बच्चों के लिए भी ये दिन बहुत ज़रूरी है। साल में एक ही बार ऐसा एक दिन आता है जिस दिन बच्चों के दिल में अपने शिक्षक के प्रति प्रेम, स्नेह और सम्मान दुगना हो जाता है। उसी के साथ साथ यह दिन हर एक टीचर को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी खुशियाँ भी देता है। और साल में एक ही बार एक ऐसा दिन आता है जिस दिन टीचर को आराम मिलता है और वो अपनी जिम्मेदारी बड़े बच्चों को सौंपती है और सारे बड़े बच्चे ये जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं। पर हम ये दिन
टीचर्स डे यानी कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं इसी दिन? हम सब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण कृष्ण जी को हम जानते ही हैं। उनका जन्म आज के दिन यानी कि 5 सितंबर 1988 में हुआ था और वो एक महान व्यक्ति थे। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से पुरस्कारित भी किया गया था। भारत रत्न ही नहीं बल्कि कई और पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। वो एक अच्छे इंसान के साथ साथ वो एक अच्छे विद्यार्थी और एक अच्छे शिक्षक भी रहे और मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि वो हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे। 1952 से हम ये शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी के प्रति हमारा प्रेम, स्नेह और आदर, इसीलिए हम उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। विद्यालयों में ये दिन बड़े ही खुशी के साथ मनाया जाता है, पर मगर इस 2020 में हम ये दिन टीचर के साथ नहीं मना पाएंगे। ऑनलाइन पढ़ाई की तरह ये दिन भी हम ऑनलाइन ही मना रहे हैं। तो मैं इस दिन पर अपने सारे शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देना चाहूँगी और उसी के साथ उन्हें धन्यवाद भी कहना चाहूँगी कि और वो हमें ऐसे ही प्रोत्साहन करते रहे और हम अपने स्कूल का और आपका नाम रोशन करते रहेंगे। तो ये छोटी सी कविता आपके लिए। हम स्कूल रोज ही जाते, शिक्षक हमें पाठ पढ़ाते। दिल बच्चों का कोरा कागज, उस पर ज्ञान अमिट लिखवाते। जाति धर्म पर लड़े न कोई, करना सबसे प्रेम सिखाते। हमें सफलता कैसे चढ़ना शिरीष बताते। सच तो यही है विद्यालयों में सच्चा इंसान बनना सिखाते। इसी कविता के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहूँगी और आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद और सारे शिक्षकों को हैप्पी टीचर्स डे। आदरणीय मुख्याध्यापक, उपस्थित सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी तसेच माझे प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, नमस्कार. मी सिमरन समीर आंबवणे, इयत्ता 9वीचे विद्यार्थिनी. तुम्हाला शिक्षक दिनानिमित्त काही माहिती सांगत आहे. आज या लॉकडाऊनच्या कठीण काळात मला प्रत्येक शिक्षकाला प्रत्यक्षात भेटता येणार नाही, म्हणून मी व्हिडिओद्वारेच सर्वांना शिक्षक दिनाचा हार्दिक अभिवादन करते. गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. या श्लोकात सांगितल्याप्रमाणे गुरुला परब्रह्म म्हटले आहे. यावरूनच गुरुचे अर्थात शिक्षकांचे आपल्या आयुष्यात किती महत्त्वाचे स्थान आहे हे कळते. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे भारताचे पहिले उपराष्ट्रपती होते. त्यांचा जन्म 5 सप्टेंबर रोजी तमिळनाडू येथे झाला. ते लहानपणापासूनच खूप हुशार, तत्ववादी व ध्येयवादी होते. ते म्हणायचे की अनेक धर्मांच्या, जातींच्या लोकांना एकत्र आणण्याचे काम ही पुस्तके करतात. तुम्हाला कोणत्याही क्षेत्रात प्रगती करायची असेल तर त्या गोष्टीचे नीट वाचन करून, त्याचा अभ्यास करून, त्याचे अध्ययन केले पाहिजे. नुसतं शिक्षक बनून सन्मान मिळत नाही, तर चांगले कार्य करून, विद्यार्थ्यास योग्य मार्गदर्शन करून सन्मान मिळवायचा असतो. एखादा कुंभार जसा मातीच्या गोळ्याला योग्य आकार देऊन त्यात चांगलं असं भांड तयार करतो, तसंच आपले शिक्षक आपल्यावर चांगले संस्कार करून, आपल्याला सर्व प्रकारचे ज्ञान देऊन आपल्याला भावी काळाचा एक सुजाण नागरिक बनवतात. शिक्षक वेळेप्रसंगी आपली आई, वडील, भाऊ देखील होतात. या लॉकडाऊनच्या काळात आपण तर घरी बसून आहोत. शाळा बंद आहे, पण शिक्षण थांबलं नाही, ते तर चालूच आहे. या लॉकडाऊनच्या कठीण प्रसंगातही आपले शिक्षक आपल्याला ऑनलाईन शिकवतात. त्यामुळे सर्व शिक्षकांचे, सर्व विद्यार्थ्यांतर्फे मी आभार मानते. या लॉकडाऊनच्या कठीण काळात शिक्षक आपला जीव मुठीत घेऊन शाळेत जात आहेत व आपले अध्यापनाचे काम बजावत आहेत. त्यांच्या या कार्यास माझे त्रिवार अभिवादन. धन्यवाद. जय हिंद. तुमने तराशा आँखों में
शुक्रिया ओ टीचर, शुक्रिया। क्लासरूम जब गुम थे, खोली तुमने ही खिड़कियां। वेलकम जिंदगी को हमें करना सिखा दिया। ओ टीचर, शुक्रिया ओ टीचर, शुक्रिया। Respected teachers and all my dear friends, today I am going to talk a few words on what I think about Teachers' Day. As you know, this year because of coronavirus, schools are closed. All the teachers were teaching us very nicely. If anyone have any problem, they would solve it immediately. But now that is not possible. I miss all of my teachers in the school. But still, they are trying their best to teach students online. To avoid loss of children's education, they are taking precautions and teaching students. We as a whole have learned a lot from our teachers. Their lesson direct us at each phase of our life. They value the most in our lives, and this is the motivation behind why we celebrate Teachers' Day, devoting them. It is a day to praise the most encouraging bond between students and teachers. Each student should value and regard their teachers. Their challenging work and sacrifice for our mental development are unimaginable. A teacher some of the time play a more critical job than our parents. They shape up our mind to differentiate between good and evil. A teacher additionally does the country-building work by making the future of every individual living in the nation. Teachers shows, yet they likewise improve our character, ability level and certainty. They think of each person, and that is the reason we should consider and respect them on Teachers' Day. Thank you. Good morning all of you. I am Varad Mehtar. Teachers are the heart of every child and they continue to affect the eternity in the days to come. Respected teachers, our guiding stars and loving student community budding stars. Wishing you all a happy Teachers' Day. We feel it our great pride and honor on this day to thank all our teachers who play a great role in making what we are. Our first thanks goes to our loving and respected principal, Miss Joseph, who is the source of inspiration and who always guides us, keeping the future in mind and preparing us to face all the challenges of the life with more positive way. Next, our heartfelt goes to our teachers who are the second parents and who always guide us and motivate us. The essence of fruit is always tasted at last, and we believe last will be the best ever. We want to thank all our students for cooperating with us and making Teachers' Day a memorable for everyone. Dear student, let's respect our teachers for their sacrifice in making every one of us a great personalities for the future. Thank you.